Let us start with an example, right? Students, in few days time, there will be a festival called Janmashtami. पता है सबको जन्माष्टमी क्या होती है? यस और नो? बेटा माइक ऑन कीजिए जरा अपना. लोटस एंड डीएफ डैफोडिल्स, माइक ऑन करो अपना आप लोग. प्लीज स्विच ऑन योर माइक. प्लीज स्विच ऑन योर माइक. So students, आपने देखा होगा जन्माष्टमी के फेस्टिवल में इन द वेस्टर्न इंडिया देर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ दही हांडी. वो आपने देखी ना, गेम होती है, तो उसमें क्या होता है, एक ऊपर मटकी लटकाई होती है जिसमें बटर होता है, एंड एक ह्यूमन पिरामिड बनाते हैं, एंड स्मॉल गाइज गोज देयर एंड ब्रेक दैट मटकी, राइट? तो यू ऑब्जर्व दैट पैटर्न? बेटा नो टॉकिंग प्लीज, नो टॉकिंग. तो उसमें क्या होता है बच्चे, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो नीचे जो होते हैं देर आर मोर पीपल. जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो नंबर ऑफ पीपल रिड्यूसेस. यस और नो? इवन हाँ जी, नो? तो फिर देखना, कोई बात नहीं, इस बार देख लेना जाके जी, अगर नहीं देखा तो ठीक है. तो इवन आप लोग भी कई बार परफॉर्म करते हो स्कूल में, तो पिरामिड जब बनाते हैं तो नीचे बेस स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों का, ऊपर जब जाते हैं तो धीरे धीरे कम होते रहते हैं. तो वहां पे क्या पैटर्न होता है? पैटर्न गोज लाइक दिस, राइट बच्चों? नीचे क्या होते हैं? नीचे देर आर मोर पीपल, जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं तो ये रिड्यूस होते जाते हैं, राइट? ठीक है. नाउ व्हाट डज दिस शोज यू कि आप ऊपर जा रहे हैं, एक पैटर्न बन रहा है. लेट्स से नीचे यहाँ पे 5% से देन 3%, देन 1%. So now it keeps on reducing, right? It keeps on reducing. Similarly, another example we take, suppose you start going to some fitness center, right? What happened? First day the instructor asks you to do some exercise. Let's say एक jumping कराते हैं आपको, तो first day he will ask you to do 20 jumps. First day you are doing 20 jumps. Next day you are supposed to do 30 jumps. Then every day is increasing. First day there will be 20 jumps. Second day there will be 30 jumps. Then there will be, let's say, 40, 50, and so. Beta, why talking? Is there some teacher present in the classes? Any teacher is there? Is there any teacher in any of the 3 sections? No teacher is there. Okay. You're right. So now students, the gym instructor asks you to do first day 20 jumps, 30, 40, and he increasing gradually. ऐसा तो नहीं होता ना कि फर्स्ट डे जाके आपको 50 या 100 जंप्स करने हो, राइट? सो नाउ इफ यू ऑब्जर्व इट अगेन, इट इज अ पैटर्न. ये पैटर्न बन रहा है बच्चों, राइट? दिस पैटर्न, दिस पैटर्न इज नोन एज अ सीक्वेंस. इसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस. सीक्वेंस में बी ऑफ डिफरेंट टाइप. सीक्वेंस में बी ऑफ डिफरेंट टाइप. एक तो ये जो बन रहा है, लेट्स से दिस सीक्वेंस इज देयर 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन. एक वो जो पहले बना था बच्चों, 7, 5, 3, 1, like this. So these are the pattern. Different patterns are forming. Another pattern can be, let's say it is 2, 4, 8, 16, right? It is like this. This is again a pattern. But what is the difference between these patterns? यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? It is every time we move to the next thing, we are adding 10. Here also we are adding 10. Here we are adding 10. यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? Every time we move to the next, we are decreasing 2. We are decreasing 2. Is this clear? Now when you come here, what you are doing? Every term is multiplied by
2. Every term is multiplied by 2. Now there are two different patterns. ये जो पहले दोनों है बेटा, when you are adding something or subtracting, this is known as arithmetic progression. This is known as arithmetic progression, right? So which we'll study today. This pattern is known as geometric progression. Geometric progression. This concept you will study in class 11, right बच्चों? So you will be studying right now arithmetic progression. What is arithmetic progression? When the sequence moves in such a way that every next term you are adding something or you are subtracting something, right? So there is a gradual increase or gradual decrease in the pattern. There may be different type of arithmetic progression. The first type of arithmetic progression can be your increasing arithmetic progression. Increasing AP. Increasing AP अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था, let's 20, 30, 40 and so on. यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस इन अ पॉजिटिव वे. नेक्स्ट इज योर डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन और डिक्रीजिंग योर एपी, जो अभी हमने सेकंड केस लिया था 7, 5, 3, 1 एंड सो ऑन, राइट? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज योर कांस्टेंट एपी, मींस कांस्टेंट एपी लाइक सेम ही चले जा रहा है जी, 5, 5, 5, तो ये चेंज ही नहीं हो रहा, सो दिस इज यूनिफॉर्म. अनदर कैन बी योर फ्रैक्शनल एपी. फ्रैक्शनल एपी, फ्रैक्शनल एपी क्या होगा? सपोज इट इज 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2, 3, 7/2 and so on, right? So here it is increasing in the fraction, right? So it can be increasing as well as decreasing. Is it clear? Any doubt, students? Now we'll understand the various concepts about the arithmetic progression. Suppose कीजिए we have a pattern 3, 8, 13, 18. If I have to find what will be the 20th number of this progression, if I have to find 20th number of a term, these things are known as, these number are known as terms of the AP. Terms of the AP means किस नंबर पे वो टर्म आ रही है. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन. इफ आई हैव टू फाइंड 20th टर्म, तो एक तो मेथड हो जाएगा बच्चे, मैं ऐसे ऐड करता जाऊं एंड देन आई कैलकुलेट, बट दैट इज पॉसिबल फॉर सर्टन टर्म्स. मींस सर्टन, अगर आपको 10-20 तक करना है तो यू कैन डू. सपोज यू हैव टू कैलकुलेट द 500th टर्म, देन इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट. तो उसके लिए क्या है, वी हैव ए पैटर्न. इफ आई राइट the terms of an AP is A1, A2, A3, A4 और इसकी लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं AN से, nth term, right? Now what is A1? This is the first term, this is the second term. The difference between the two terms, the difference between two terms is known as common difference, is known as common difference. इसको डिनोट करते हैं बच्चों D से, राइट? जैसे यहाँ पे है, what we are doing here, every next term we are adding 5, yes or no? So this plus 5 is known as common difference. तो फर्स्ट टर्म क्या थी 3, 3 में आपने एक बार 5 ऐड किया, मींस A1. सेकेंड टर्म बन जाएगी बच्चों A1 प्लस D. थर्ड टर्म में आपने 2 times D ऐड किया, सो दिस इज A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D एंड सो ऑन
it will go like this. Now students, just observe. A1 किसके इक्वल है बच्चों? A1 के. A2 is A1 plus D. A3 is A1 plus 2D. A4 is A1 plus 3D. So same pattern चल रहा है. What you can observe, first term में you have added 0 time D, means you आपने कुछ D नहीं add किया. Second term में you have added 1 time D. Third term में 2 time D. Fourth term 3 time D. Now if you go by this, what method you observe? अगर आपको nth term find out करनी है तो what you have added in A1, जो ये टर्म का नंबर है इससे एक लेस. ये देखिए A2 था यहाँ पे 2 minus 1 1D. 3 था 3 minus 1 2D. 4 is there 4 minus 1 3D. Is this clear? So the pattern is An is equal to A1 plus n minus 1 into D. This formula जनरल में इसको A1 को हम डिनोट करते हैं A से. This is the formula for nth term of an AP. This formula is for nth term of an AP. Here An is nth term, A is first term, B is common difference, and n is number of terms or term number, right? Any doubt in this, students? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन यहां तक. एनी डाउट बच्चों? नाउ वी टेक 2 7, वी टेक एन एपी. हमने एक एपी लिया बच्चे 2 7 12 17 एंड सो ऑन, राइट? If I have to find, let's say 18th term of this AP and nth term, how we can find out? आप लोगों ने चैप्टर कर लिया स्टूडेंट? ये have you done this chapter in school? Yes. Can you find the 18th term? Yes. Please do it बच्चों. हाँ जी, आप नहीं कर रहे बेटा? लोटस वाले फ्रंट बेंच पे बैठे जी. Teacher, please look into the students whether they are doing it or not. हाँ जी, who has done it? Anyone who has done it? कितना है बेटा? खड़े होके बताइए जरा. My 87. Please sit down. What will be the nth term? What will be the nth term? देखिए बच्चों, first thing was 18 term. You apply the formula A plus n. अब n क्या हो गया आपके पास? 18 minus 1 into D. What is A here? A is 2. What will be D? 7 minus 2. It will be 5. So put these two values here. 2 plus 17 into 5. Right, students? So how much this comes? 87, right? You was right.
So 18 term you have find out. Now how to find out nth term? See students, when you have to find the nth term, keep n as it is. Keep n as it is. So what this becomes? 2 plus n minus 1 into 5. So what this becomes? 2 plus 5n minus 5. So an will become 5n plus 2 minus 5. This will be minus 3. So this will be the nth term. Right, bacho? Nth term will be 5n minus 3. So this way you can find the nth term. Have you understood? Yes or no, bacho? Yes. Now, if it is given, चलो पहले note करो जल्दी से जरा. If an is given to you, an is given 5n minus 3. If I ask you find 24th term, find 24th term. Only an equal to 5n minus 3 is given to you. You have to find 24th term. How you will find it? If an is given 5n minus 3, find the 24th term. ये सारी चीजें आपको लेट से नहीं गिवन है. Anything is not given from these things. Nothing is given. Only thing is given. An is 5n minus 3. This thing is only given. How to do this? Anji students, tell me. Put 24 in place of n. 5 times 24 minus 3. So this becomes. Have you understood बच्चों कैसे find out करना है? If an is given to you, then how to find out the term? Now another question, students. हाँ जी बच्चों, any doubt? हाँ जी बताइए क्या डाउट है बेटा? आगे आके बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? प्लीज कम फॉरवर्ड. हाँ जी हाँ जी बोलो बोलो बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? सर एन टर्म रिपीट कर दो, कैसे फाइंड करते हैं? एन टर्म हाँ कर देता हूँ बेटा, बैठिए प्लीज. देखिए बच्चे आपको गिवन है ए गिवन है, लेट्स से ए इज गिवन 3, डी इज गिवन 7. You have to find nth term, right? आपको a और d given है. What is the formula for nth term? an is equal to a plus n minus 1 into d. यहाँ तक कोई डाउट बचे? These two things are given to you. You have to find nth term. Now just put the value of a and d. आपने a और n की वैल्यू पुट कर दीजिए. Is this clear? Is this clear or not? Now solve this बस. और तो कुछ नहीं करना है इसमें. इसको सॉल्व किया तो क्या बन गया बेटा? ये इक्वेशन बन गई आपकी. तो ये आपकी nth टर्म आ गई. Is it clear or not? बच्चे any doubt please tell me, ask the questions if you still have some doubts. Only thing is you have to just put the value of a and d in this formula, right? अब आपके पास ये वाला फार्मूला आ गया. an is this. सपोज आपको यहां से कोई टर्म फाइंड आउट करनी है. इट इज वेरी इजी. लेट्स से आपको 8th टर्म फाइंड आउट करनी है. फाइंड द a8. तो व्हाट यू विल डू? You will replace this n by 8. This n by 8 on both sides. 56 minus 4. That will be
52. Is it clear? So you should know how to find an term, or an term given है तो you can find any term from this. Is it clear or not, बच्चों? Yes, sir. Now another way. Let's say if an is given 6n plus 4, find d. Question is this: you have to find now d. How to find out d from this? An is given 6n plus 4. Please find out the d from it. How will you do it? What is d? What is d? Second term minus first term or third term minus second term. यही होता है ना d? Yes or no? Yes or no? Yes. So what you can do, put n as 1, 6 into 1 plus 4, how much it becomes? Put n as 2. Is it clear? Is this clear or not? Is this clear or not? If yes, please raise your hand. अगर किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन बच्चे. आपको an की डेफिनेशन गिवन है, an इज गिवन, d फाइंड आउट करना है. So you replace n by 1, you got first term. You replace n by 2, you got second term. Right? So what will be d? a2 minus a1. That is 16 minus 10. That is 6. That is your common difference. Have you understood this? Yes or no, बच्चों? Yes or no? चलिए आगे चले फिर हम. Shall we move to the next question? Right, students. So next question is, find 75th term of AP. AP क्या है बच्चों? 6, 6 1 by 2, 7 and so on. Please do this question. Find 75th term of the AP. Hello, everybody, find out. First of all, find out the D, A, and then put the value in the formula. Here, since we have to find the 75th term, what will be your n? What will be n, बच्चों? 75. A will be 6. D find out कर लो और then solve it. हाँ जी स्टूडेंट्स, हो गया? बच्चों आप भी कर लो. डैफोडिल्स, फ्रंट बेंच, सेंटर लाइन, उसी का कापी कुपी बंद करके इतना बैठ गए जितना क्लास ओवर हो गई है. काका हो गया? खड़ा होके 10 फिर मैनू. हाँ जी 43. योर वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा. 43 सर. 43 कैसे आ गए यार? 75th टर्म.
A is 6, अच्छा 43, राइट, ठीक है जी। तो D is this 75th term, A plus n minus 1 into D, 6 plus 74 into 1 by 2। हाँ जी बेटा 43 is correct, very good, right, so 43 ठीक है, 43 is the correct answer। Next question students, now question is, this is an AP, check whether 0 is a term of this AP or not। We have to check whether 0 is the term of this AP or not। How to do this question? Do you know how to do it? Beta, what we'll do, AP is given to us, we'll assume let 0 is the term of the AP. So then 0 will be an, right? So now find the value of n. Take 0 as an and find the value of n. If n comes out to be a whole number, if n is a whole number, then 0 is the term of the AP, otherwise not। देखिए किस तरह से करना है बच्चों, आपने n को 0 लिया, फार्मूला में अप्लाई किया, an इक्वल टू a प्लस n minus 1। What is the d students? What is d here? -3. So put -3. Now solve this. If you get n as a whole number, then 0 is a term. If n is not a whole number, then 0 is not the term of this AP. Please do it. Yes, students. What is the value of n? Yes, students, solve कीजिए जरा इसको. What is the value of n? Is n a whole number or not? देखिए बच्चों, 0 इक्वल टू 74 minus 3n plus 3. Take 3n on this side and this becomes 77. n is 77 by 3. इसको डिवाइड किया आपने, ये आ रहा है बच्चों। Since the value of n is in the fraction, therefore 0 is not the term of this AP, right? 0 is not the term of this AP. Is it clear? तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चे। If n comes out to be in the whole number, then it is a term, otherwise not a term. Next question देखिए बच्चों, find the first negative term of AP. AP is given 247,
235, 223. Please do this. You have to find the first negative term of this AP. How to find out first negative term? Bachcho, you know how to find out? Do you know how to find out the first negative term? Yes, then raise your hand. How many of you know it? Nobody. देखिए कैसे करना है बच्चे. जब आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड आउट करनी है, सो अगेन लास्ट क्वेश्चन की तरह रिपीट करना है. लेट 0 इज द टर्म. We find the 0 and take 0 is an. लास्ट टर्म लिया आपने 0 को, तो what is becomes an equal to a. What is the d in this question? What is d? -12. सॉल्व कर लिया बच्चों इसको. Right? Take 12n on the other side. 259. What comes out to the n? 259 by 12. 12 2s are 24, 12 1s are 12, 7 by 12. Right? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए जी. Clear? Is this clear बच्चों? Now what is this number? This number is 21 7 by 12. So please listen carefully the next step. What is the next whole number to this number? Next matlab. What is the next whole number? 22. So 22nd term will be the first negative term. So your answer will be n is 22, means 22nd term will be the first negative term of this expression. Is it clear? Is this clear or not? Why so much talking? Have you understood the question? If not, then please ask me the doubts. But no talking, please, बच्चों. हाँ जी बेटा, ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ जी आपको? Is this clear or not? आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Whatever is the next whole number, that will be the first negative term. अब हमारे पास n22 आ गया. अगर आप 22nd term फाइंड आउट करेंगे, what will be the 22nd term? A plus 22 minus 1 into d. So what this becomes? 21 into minus 12, 247 minus 12 ones are 12. So that will be the -5. So this will be the first negative term of the AP. Is this clear? So right students, today we'll finish here only. In the next class we will finish this concept. So thank you very much for joining. Thanks a lot all the teachers present.